Assalamualaikum everyone, my name is Gulizara, here to bring a newspaper breakdown session courtesy of the KIP CSS network. I hope that this video reaches you in good health and spirits. Before I begin, I would like to ask you to please try to ignore the background sounds behind me because as you can see I am in a rural setting. I'll try to make sure that I speak as loud as I can to cancel out any background effect. But आपको चिड़ियों की चहचहाट और कॉव बेल्स आती ही रहेंगी, ठीक है? That's really musical. So what we're going to be talking about is नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जो उनका भी जो नया एक तरह का फड्डा स्टार्ट हो चुका हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे. So basically North Korea and South Korea was basically a peninsula before the Second World War. It was divided after the Second World War. The North Korea was taken under the Russian wing, and the USA supported South Korea. So what happened was that after the Cold War ended, after the Soviet Union collapsed, North Korea was left without a benefactor and an ally, while the South Koreans had a huge benefactor in the name of USA. Okay? So they prospered and North Korea didn't. Not only that, जो North Korea की जो ruling family है, the Kim family, is extremely secretive, and they have been ruling North Koreans for a better part of about 40 years. 40 साल एक बहुत लंबा अरसा है, and they have been ruling with an iron hand for 40 years. So now अभी उनके politics में क्या change आया है, ठीक है? Or given how North Korea is extremely straight-laced and conservative, it comes as a huge surprise that suddenly Kim Jong-un, who is Kim Jong-un 2 is the undisputed supreme leader of North Korea, उनकी जो right hand है वो is no other than his own sister Kim Yo-jong. So Miss Kim Yo-jong has the same education as Kim Jong-un. She was and still is the propaganda specialist, okay, and she is responsible for directing communications between North Korea and South Korea. She is to be credited with the historic April 2018 summit that was conducted between North Korea and South Korea. Or also she is also to be credited with excuse their sound. She is also to be credited with conducting and making a deal between both these two countries. अब इस कंट्री इन दोनों कंट्रीज़ के दरम्यान में जो अप्रैल 2018 की डील थी, इसमें एक क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ दिस कंट्रीज वुड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एनी काइंड ऑफ यू कैन से पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग बिटवीन दिस टू कंट्रीज, ठीक है. और इस क्लॉज को जो है वो रीइंफोर्स किया गया. अब बात करते हैं कि अभी के इवेंट्स 2020 के जो है वो क्या हुआ. ऑन May 31st 2020 a group of North Korean defectors who were a part of the rebel group called Fighters for a Free North Korea, they had defected back in 2017, ठीक है. और इस ग्रुप ने क्या किया, दे फिल्ड अबाउट 20 बिग बलून्स विथ अबाउट 5 लाख लीफलेट्स, ठीक है, अबाउट 100 SD कार्ड्स एंड 500 CDs एंड पिक्चर्स, ठीक है. और इन्होंने इन 20 बलून्स को जो है वो ओवर द बॉर्डर फ्लोट ऑफ कर दिया. अब उन्होंने फ्लोट ऑफ कौन से किया, नॉर्दर्न साइड के ऊपर, द बॉर्डर दैट इज शेयर्ड बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उसके जो नॉर्दर्न साइड है दैट इज़ डीमिलिटराइज, ठीक है. सो दैट मीन्स कि इस डीमिलिटराइज जोन के अंदर दे वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू सर्विलेंस. तो क्या हुआ कि वो 20 के 20 बलून्स जो हैं वो उड़ के साउथ कोरिया वाली साइड से नॉर्थ कोरिया वाली साइड पर चले गए. अब ये टेक्निकली स्पीकिंग कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन अ कंट्री जहाँ इंफॉर्मेशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज मनी, द नॉर्थ कोरियंस वर इफेक्टिवली miffed, I would say. They were very miffed. So Kim Yo-jong was given the responsibility for mitigating the fallout from this entire issue. So what she did was she asked the North Korean leadership to the South Korean leadership to punish the defectors, which they did not on account of them being a liberal democracy. जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, Kim Yo-jong made sure कि जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वर कट ऑफ, including the diplomatic hotline that connected both the leaders of the countries, that is Moon Jae-in, who is the president of North Korea, and Kim Jong-un. आपके पास ये कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट हो गया बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और करीबन 2 साल का जो प्रोग्रेस इन दो कंट्रीज़ ने कोई माड़ा मोटा बनाया था दैट हैज़ बीन डिमोलिश्ड. एक बात. दूसरी बात एक, द जॉइंट लाइसेंस ऑफिस दैट वाज मेड एट अ कॉस्ट ऑफ $8 million एट द एक्सपेंस ऑफ साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया ने उस ऑफिस के लिए पैसे दिए थे, दैट वाज डिमोलिश्ड ऑन ट्यूसडे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किम
Kim Yo Jong. ठीक है, so this is the entire scenario that has happened as of right now, and this in huge theatric आप समझ लें कि जो थिएट्रिकलिटी है जो साउथ कोरिया ने शो किया इन ट्राइंग टू, एक्सक्यूज द नॉइज प्लीज, इन ट्राइंग टू कंडक्ट ह्यूज आप समझे कि डिबाकल ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है, दैट हैज़ इफेक्टिवली ग्रैब द वर्ल्ड मीडिया, ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी मोमेंटुअस, इफेक्टिवली यूजलेस लेकिन एक मोमेंटुअस जेस्चर ज़रूर है. सो बात करते हैं कि वाई डिड साउथ कोरिया फील द नीड टू कंडक्ट सच अ ह्यूज यूजलेस जेस्चर. South Korea, since the beginning, ठीक है, has always used these theatrics to make sure that it gains an upper hand in the negotiations or to develop a sense of urgency. अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया की, आफ्टर द 2017 टेस्ट दैट इट हैड कंडक्टेड इन ट्राइंग टू परसू न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, सो द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्या किया, दे इम्पोज्ड अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली heavy punitive measures on South Korea, जिसकी वजह से effectively Pyongyang, which is the capital of North Korea, was effectively barred from selling anything abroad by international law. मतलब इंटरनेशनली अगर जो है वो कुछ बाहर सेल करने की कोशिश करते हैं, दे आर गोइंग टू बी फेस्ड विद सैंक्शंस. एनी कंट्री दैट इज़ गोइंग टू बाय फ्रॉम नॉर्थ कोरिया इज़ गोइंग टू बी फेस्ड विद सैंक्शंस, ठीक है. और अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2018 की डील के अंदर, ठीक है, तो उसमें ये भी जो है वो एक क्लॉज थी कि अगर कोई सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगते हैं तो साउथ कोरिया वुड बी इनकम्बेंट इन ट्राइंग टू हेल्प देम आउट ऑफ दिस मेस. That did not happen, okay, because South Korea is number one is not trying to run afoul of international law, and number two it also fears the United States of America, क्योंकि America is the one that is to be credited with the meteoritic rise of South Korea. As of right now South Korea जो है वो effectively जो है वो आप समझ लें कि autonomous हो चुका है in its economic activities, लेकिन let's not forget that जो boost दिया गया था वो सबसे पहले South Korea को USA ने ही दिया था. So अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो किस तरह यूएसए और साउथ कोरिया के रिलेशनशिप को जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, उसको इफ़ेक्टिवली आप समझे कि एक तरह से उसको निगेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके तरीक़ेकार क्या है उन्होंने लिया है कि दैट बाय इंक्रीजिंग हॉस्टिलिटीज़ ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर दे अश्योर दैट साउथ कोरिया इज़ गोइंग टू बी फीलिंग द पिंच, ठीक है. और साउथ कोरिया हैज़ ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड इन ट्राइंग टू मेंटेन सम काइंड of peace between themselves and North Korea. So जो चीज़ नॉर्थ कोरियंस को अब साउथ कोरिया से चाहिए दैट ऑलवेज रन्स अफाउल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस. और सूनर और लेटर बिकॉज ऑफ दिस आप समझें कि दिस प्रॉब्लम जो कि नॉर्थ कोरिया फेस कर रहा है एंड ट्राइंग टू गेन वट एवर इट्स नीड्स आर, या जो है उसकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पर जो इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस, ठीक है, ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता साउथ कोरिया को भी चैफ करना शुरू करेगा. वाई? बिकॉज साउथ कोरिया डज वॉन्ट पीस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड नॉर्थ कोरिया. वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक यूएस सेंक्शंस जो हैं वो मौजूद है, और उन यूएस सेंक्शंस के प्रेशर के अंदर साउथ कोरिया बकल करता रहेगा. So, effectively speaking, South Korea might just see the US sanctions as a liability for maintaining peace between both these countries and across the border as well. और एक स्टेबल साउथ कोरिया के लिए एक स्टेबल नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज़रूरी है. सो अगर हम देखते हैं कि हाउ इज़ इन एन अदर एंगल हाउ इज़ किम यो जंग्स you can say imminent succession in place of Kim Jong Un important. It is very important. एक ऐसी सोसाइटी आप समझे कि एक ऐसे सेटअप के अंदर जहाँ औरतों को जो है वो एक ड्यूटीफुल रोल के अंदर ढाल दिया गया है कि मदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वाइफ्स हैं, एंड दैट्स इट. ये एक ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन है. शी इज़ बीइंग किम यो जंग, मिस किम यो जंग इज़ बीइंग ग्रूम्ड फॉर अ रोल एंड माइट जस्ट बी द next successor of South Korea after Kim Jong Un, because Kim Jong Un के अपने बच्चे जो हैं वो they have not been in the spotlight. No one knows what their names are except for the first one, ठीक है. So एक इंतहाई सिक्रेटिव फैमिली के अंदर एक इंतहाई सिक्रेटिव तरीके से एक नया जो है वो आप समझें कि फिगर हेड उसको प्लेस अप किया जा रहा है, एंड दैट फिगर हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेशंस बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग प्रोपेगेंडा एंड its image outside in the world as well. So in conclusion अगर हम बात करते हैं तो South Korea has always been prone to theatrics, number one. Number two, Kim Yo Jong might be new to the political field, but she is playing it like an old North Korean player, and she knows just how to press the buttons around
the buttons of South Korea and the USA as well. Number 3, they might just be successful. The North Koreans might just be successful in trying to gain the upper hand in any future negotiations. So this is all for today. I hope this was enlightening for you. And please excuse me wiping off my sweat every couple of minutes because literally I'm sweating bullets right now. So please, in conclusion, I would like to say कि गर्मी तो खैर बाहर बहुत हो चुकी हुई है. अगर आपने कोरोना की वजह से अंदर नहीं बैठना तो प्लीज़ बराए मेहरबानी गर्मी की वजह से अंदर बैठना शुरू कर दें. Keep yourself safe, stay hydrated. Allah Hafiz.